Students, how are you? Our today topic solution of system of linear equation using inverse of matrix और मैट्रिक्स मेथड। आज हम मैट्रिक्स मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है? व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वन और मोर linear equations having same set of variables. I repeat again, it is the collection of one or more linear equations having same set of variables. So general equation of system of linear equations are a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 plus and so on. A1n xn is equal to d1, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 and so on plus a2n xn is equal to d2, a31 x1 plus a32 x2 plus a33 x3 and so on plus a3n xn is equal to d3 and so on. am1 x1 plus am2 x2 plus am3 x3 and so on. amn xn is equal to dn. These are the system of linear equation in general form. Here x1 x2 x3 and xn are the variables. a11 is the coefficient of x1, a21 a31 am1 are the coefficient of x1, a12 a22 a32 am2 coefficients of x2, a13 a23 a33 and am3 are the coefficients of x3 and so on. a1n a2n a3n amn are coefficients of xn, and d1 d2 d3 and so on dn are the constant terms of these linear equations. So these equations are known as system of linear equation because all these equations have same set of variables, x1 x2 x3 and so on xn. The matrix notation of these linear equations, the matrix form of these linear equations: a11 a12 a13 and so on a1n, a21 a22 a23 and so on a2n and so on, am1 am2 am3 and so on amn. This is the coefficient matrix because this matrix is made from the coefficients of variable into x1 x2 and so on xn. This matrix is known as variable matrix because this is made from the variable is equal to d1 d2 d3 and so on dn is constant matrix of constants. This matrix coefficient matrix is denoted by a, and the variable matrix is denoted by capital X, and the constant matrix is denoted by capital B. So where a is coefficient matrix, x is variable matrix, or it is a column matrix because it has only one column. So it is column matrix of variable. Column matrix of variable. Now B matrix B is d1 d2 d3 and so on dn. It is also a column matrix because it has only one column, so it is column matrix of constants. Column matrix of constants. Now if determinant a not equal to 0, that is a is non-singular matrix, so therefore ax is equal to b. अगर a is non-singular है तो it means inverse of matrix is exist, so we multiply by a inverse a x is equal to a inverse b. A inverse into a is I, identity matrix, is equal to a inverse into b. Now
I into x is equal to A inverse B. So the x is equal to A inverse B. Sometimes we sometimes we see in other books that this equation is written in this form. ये जो इक्वेशन है कभी अलग अलग बुक्स के अंदर या अलग अलग ऑथर्स इसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, a इंटू एक्स बार इज इक्वल टू बी के ऊपर बार लगाते हैं। इस बार का कोई और मतलब नहीं है, इस बार का मतलब है, इस एक्स बार का मतलब है कि कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। और इस बी के ऊपर बार लिखा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। In matrix system of linear equation, x bar show column matrix of variable and bar of b show column matrix of constant. Now previous classes में हमने पढ़ा हुआ है, that is 10th class से हमने पढ़ा हुआ है कि system of linear equations has three type of solution. First, unique solution, and these system of linear equations are consistent. Second is no solution, and these system of linear equations are inconsistent. And infinite many solution, this system of linear equations are consistent. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ये थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही होते हैं, इनके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं होता। एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक नो सॉल्यूशन होता है, और तीसरा होता है मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या तो एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। एग्जैक्ट 2, एग्जैक्ट 3, एग्जैक्ट 4 सॉल्यूशन नहीं होते। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो system of linear equation has unique solution. Unique solution means exact one solution. Unique solution, exact one solution। और ये system of linear equations हैं वो consistent कहलाएंगे। consistent का मतलब है कि इस सिस्टम का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। नाउ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन कब होगा? इफ एडजॉइंट a into b not equal to 0, adjoint a into b not equal to 0, then the system of linear equations has no solution and these system of linear equations are inconsistent. Now many solution, infinite many solution, infinite many solution, this system of linear equation are consistent, consistent। एंड ये हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है? इफ एडजॉइंट a इंटू बी अगर जीरो आता है मैट्रिक्स में, एडजॉइंट a इंटू बी जीरो आता है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। इन आवर CBSE सिलेबस वी स्टडी ओनली द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो नाउ वी टेक द क्वेश्चन हाउ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व बाय दिस मैट्रिक्स मेथड और इनवर्स मेथड। सॉल्यूशन गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। तो जल्दी से अब हम क्वेश्चन लेते हैं। आई टेक ए क्वेश्चन, सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 8y प्लस 5z इज इक्वल टू 5, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू -2, x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 2। Solve this system of linear equation by inverse method or matrix method. So first we make coefficient matrix A. So coefficient matrix is made from coefficient. So 2, 8, 5, 1, 1, 1. Coefficient of x is 1, coefficient of y is 1, coefficient of z is 1. Now third row, coefficient of x is 1, coefficient of y is 2, coefficient of z is -1. This is the coefficient matrix. Now column matrix of variable, it is made from variable. There are three variable in this system of linear equation, x, y, z. So x is equal to matrix x, y, z. This is the column matrix of variable. And matrix B, it is the column matrix of constant. The constants are 5, -2 and 2, 5, -2, 2. Now system of linear equation has unique solution, infinite many solution or no solution.
तो फर्स्ट वी चेक इट्स डेटर्मिनेंट, हम इसका डेटर्मिनेंट चेक करें। तो डेटर्मिनेंट ए 2 8 5 1 1 1 1 2 -1। Now, system of linear equation has no solution if adjoint a into b not equal to 0। ये हम तभी निकाल कर देखेंगे जब डेटर्मिनेंट a नॉट इक्वल, डेटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा? जब एडजॉइंट a इंटू बी 0 आएगा, और ये हम तभी निकाल कर देखेंगे तो डेटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 आए। तो जब डेटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 आए तो एडजॉइंट a इंटू बी हमें निकालना होगा। एडजॉइंट a इंटू बी 0 आता है तो मैनी सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 0 आता है तो नो सॉल्यूशन बनेगा। तो सो डेटर्मिनेंट a hide the row and column of 2, 1 into -1 -1 -2। Now we hide row and column of 8, so -1 in -1, hide 5 row or column of 5, hide row or column of 5, so 2 -1। Now we get -6 plus 16 or plus 5, this is equal to 15, not equal to 0। So this system of linear equation has unique solution, that is exact one solution। Now we find a inverse, solution is given by x is equal to a inverse b। so first we find a inverse। a inverse निकालेंगे तो a inverse निकालने से पहले हमें कोफैक्टर निकालने होंगे। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ a निकालना होगा तो कोफैक्टर्स, तो सबसे पहले अब हम इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालेंगे। a11 a11 हाइट a11 पोजीशन, ये आएगा 1 1 2 -1 -1 raised to power 1 plus 1। this is equal to, after solving we get -1 raised to power 2 1, ये -1 -2, this is equal to -3। a12 -1 whole raised to power 1 plus 2, हाइड a12 पोजीशन, a12 पोजीशन हाइड करेंगे तो 1 1 1 -1, on solving we get this is 2। a13 -1 raised to power 1 plus 3, hide a13 position, we get the minor 1 1 1 2, on solving we get this is equal to 1। a21 -1 raised to power 2 plus 1, hide the position a21 हम इसको हाइड करें, we get 852 -1, 852 -1, on solving we get this is equal to 18। a22 -1 raised to power 2 plus 2, hide a22 position, a22 position को हाइड करेंगे we get 251 -1, so on solving we get -7। now we find the cofactor a23, hide the position a23 is, so we get 2 8 1 2, on solving we get this 4 -8 4, a23 सॉरी यहाँ पर -1 raised to power 2 plus 3, right। now a31 hide a31 position, -1 raised to power 3 plus 1, we get minor 8511, on solving we get 8 5 is 3, so this is equal to 3। a32 -1 raised to power 3 plus 2, we hide a32 position, we get the minor 2511, we get the minor 2511, on solving we get 3। a33 -1 raised to power 3 plus 3, hide 3 a33 position, so we get the minor 2811, so on solving we get -6। so this, hence the adjoint a। now we find adjoint of this matrix A, so it is the transpose of cofactor matrix, so a11 -3, a12 2, a21 a13 1, a21 18, a22 -7, a23 4, a31 3, a32 3, a33 -6, transpose of this cofactor matrix, so we get -3 to 1 -3 to 1 18 -7 4 3 3 -6, this is the adjoint of this matrix A। now we find A inverse, so what is the A inverse? now we find A inverse, so what is A inverse? so A inverse is A inverse 1 upon determinant A into
adjoint A. Now A inverse is equal to 1 upon determinant A. Determinant A is 15. Adjoint A minus 3, 18, 3, 2 minus 7, 3, 1, 4 minus 6. This is the A inverse. Now solution is given by x is equal to A inverse B. X is the column matrix of variable x, y, z. A inverse 1 by 15 into minus 3, 18, 3, 2 minus 7, 3, 1, 4 minus 6, and matrix B is column matrix of constant. Constants are 5, minus 2 and 2. So now multiply row by column method. We get 1 by 15, 3 into 5 minus 15 plus 18 into 2 minus 36, 3 into 2 6. Second row multiply with this column to 10 plus 14 plus 6, 5 minus 8 minus 12. So we get the matrix, column matrix, minus 45, 30, 5 minus 8 minus 12, ये आ जाएगा minus 15. Now 1 by 15 multiply, so every element multiply with 1 by 15, so we get minus 3, 15 to the 30, 15 1 ja 15 3. Hence this implies that x is equal to, on comparing by equality of two matrices, so by equality of two matrices x is equal to minus 3, y is equal to 2, z is equal to minus 1. This is the solution of system of linear equation. This method is known as matrix method and the inverse method.